Good evening, everyone. I hope that I'm clearly audible and visible to everyone. So, कैसे हैं आप लोग? So, एग्जाम पास आ रहा है एंड आपके पास अब इतने कम दिन बचे हुए हैं कि आप डेज को लिटरली गिन सकते हैं। सो मेक श्योर दैट आप लोग मुझे लाइव चैट में बताओ कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आर यू फीलिंग एंग्शियस? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? आप कैसा फील कर रहे हो मुझे लाइव चैट में बताओ, सो दैट मुझे भी पता चले कि कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द लाइव चैट एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे, मैं बीच बीच में हर एक स्लाइड के बाद अ, आप सभी से या ओके, ऑल राइट। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, बीच बीच में आई विल टेक योर क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइव चैट। जिस जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लाइव चैट में डाल देना एंड देयर वी विल पिक इट अप एंड देन वी विल डिस्कस इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay. So, how many of you have actually heard about this term, Torrance test? Okay. जिस जिसको भी इसके बारे में कुछ भी पता है, आप चैट में डालो एंड पोस्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, एज ऑफ नाउ नो रिस्पॉन्सेज इन द चैट, बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो जब हम टॉरेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई एग्जैक्टली वी नीड दिस टेस्ट ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, कोई रीजन होगा कि ये कॉलेजेस क्यों इस तरीके के टेस्ट लेते हैं, मतलब जिसमें आपको ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनमें आपको इनकम्प्लीट लाइंस को कंप्लीट करना है। मैं एक रेफरेंस के लिए आपको एक विजुअल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो विजुअल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके, ये एक टॉरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। अब आपने ऐसे क्वेश्चंस, आई एम एज्यूमिंग कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने अभी तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा। और जब भी आप इन्हें सॉल्व कर रहे होगे तब आपको पता चला होगा कि इन क्वेश्चंस में कई लोग स्ट्रगल करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, बट इन वाले क्वेश्चंस में जहां पे ऑलरेडी आपको एक डिफाइंड लाइन प्रिंट करके पहले से दे दी गई है, वेन यू कांट इवन रोटेट इट, जब आप इसे मूव भी नहीं कर सकते, रोटेट भी नहीं कर सकते, वो एक जगह पे फिक्स है। ओके, अब यहां से आपको अपनी एक क्रिएटिव पॉसिबिलिटी के साथ इसे कंप्लीट करना है। अब इसे हम कंप्लीट करते हुए कुछ भी बना सकते हैं। ओके, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो चीज जितनी डाइवर्स होगी उसके उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे इफ आई हैव टू नोट इट डाउन, diversity is the key. Okay, come up with as much diverse responses as possible. Okay, so that is the catch. सो somebody has said तैयारी अच्छी चल रही है बट आइडियाज बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। कोई बात नहीं, एक और भी तरीका है अपने आइडियाज को इम्प्रोवाइज करने का, वो ये है कि जिसके भी साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हो या आपके फ्रेंड्स या फिर आपके क्लासमेट्स या जिसको भी आप जानते हो जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है, आप उनके भी रिस्पॉन्सेज को चेक करो एंड इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर मेन, देर इज बेसिकली अ कॉमन ग्रुप, देयर ऑल्सो स्टूडेंट्स की पोस्टिंग द रिस्पॉन्सेज। जितने आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज को कंज्यूम करोगे, जितना ज्यादा आप विजुअल्स को देखोगे, ओके, उतना आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दीज कपल ऑफ डेज। ओके, सो आई वुड से आइडियाज बेटर हो सकते हैं। आपके पास अभी भी काफी टाइम है, अगर आप आज भी शुरू करते हो या फिर आप कुछ टाइम के बाद भी शुरू करते हो। आइडियाज एक ऐसी चीज है जो आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छे से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, उससे पूछो कि क्या वो कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं जिनसे उन्हें अच्छे आइडियाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डॉक्यूमेंट दैट हाउ एग्जैक्टली दे आर अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइडियाज तो सिर्फ क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने से ही आ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कैच। सो somebody is also asking that how to increase ideation speed. If you have to genuinely work on ideation speed increase, then you have to follow a design process, be it mind mapping, be it the design process, let's say 6Ws and 2H और ऐसे जो processes हैं, अगर आप ये terms पहली बार सुन रहे हो, ओके,
तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड की हुई है, मेक श्योर दैट यू चेक आउट ऑन आवर चैनल. इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो demonstrated some of my work along with these processes where I have used these processes. You can see and learn over there. Okay, you will be able to easily find it in our playlist. So make sure that you refer to those resources. Okay, yeah. So that's the case. Okay. Now, coming back to Torrance test, we have to understand why it is being tested right now. In this exam, it is being tested because this is one of the most authentic tests to understand your creative acumen. कौन कितना creative है, इसके लिए ये वाला टेस्ट होता है. इस टेस्ट के मैं आपको बहुत ही कम टाइम लेके बिना ज्यादा बोर किए मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ. This Torrance test was related to creative thinking, okay, and इनको invent किया था E. Paul Torrance ने, okay. So sorry, yeah, so basically he is the inventor of this test. All right, ये एक social experiment की तरह काफी बड़े स्केल पे इस टेस्ट को लिया गया था. And then what they realized is that इस टेस्ट के responses के बाद जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहे थे टॉरेंस टेस्ट में, those students later on in their life they were pursuing creative fields. All right, but the people who were giving quite rigid responses, they were then uh, uh, taking those kind of fields, they were excelling in those kind of fields where their technical skills were more required. Okay, so that means ये वाला टेस्ट एक्चुअली में चेक करता है कि आपका विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले अगर हमें टॉरेंस टेस्ट को समझना है, मैं आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. अगर किसी ने सॉल्व किया है, आप अभी लाइव चैट में मुझे बताओ कि जब आपने इसे सॉल्व किया तो क्या आप उसे इजीली सॉल्व कर पा रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, क्या आपको जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा था, और अगर आप कर भी पा रहे थे तो आपको कितना टाइम लग रहा था. क्या किसी ने टाइम को नोटिस किया है? अगर किसी ने टाइम को नोटिस किया है तो वो भी ये मेंशन करो चैट में दैट आपको कितना टाइम लग रहा है. ओके, देन फिर ये भी बताओ दैट आर यू सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्सेज विच यू आर गेटिंग फ्रॉम टॉरेंस टेस्ट. क्या आपको लगता है कि वो क्रिएटिव होगा? ये सारी की सारी चीजें आपको मॉनिटर भी करनी है. अगर किसी ने मॉनिटर की है, लेट मी नो इन द चैट. ओके, by the way, all these terms and all these videos which I am mentioning over here, all right, we will tag all of their links in the description later on. Okay, in the comment section also. So yeah. Okay, so somebody is saying that time ज्यादा लग रहा है up to 2 hours. ठीक है, नॉर्मली ऐसा होना पॉसिबल है. इनफैक्ट कई लोगों को तो 2 hours लगाने के बाद भी आइडियाज नहीं आते. सो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. शुरुआत के स्टेजेस में टॉरेंस टेस्ट में ऐसा होगा. ओके, सो डोंट वरी, स्टिक टू द प्रोसेस. देयर आर ऑल्सो सम ट्रिक्स एंड सम टिप्स जो आप ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद आप इसे ट्राई करके आप लेटर ऑन बताना कि वेदर इट इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट. ये सारी वो ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं. ओके, बिकॉज व्हेन आई cracked my exam back in 2021. Okay, and I have also cracked both IIT's exam as well as an IIT's exam too. So in that case, I have used certain tips and tricks which I have been teaching a lot of students for all these years, and what I have observed that it does work out for them. So इस चीज को भी हम चेक करेंगे. ठीक है, आप भी इन्हें एक बार ट्राई करके देखना और बताना that whether it is working out for you or not. ओके, सो somebody is saying किया था बट उसमें एक दो ठीक थे, अदर आर नॉट दैट मच क्रिएटिव. ओके, दिस इज ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल टू हैपन. एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को सैंपल रख के समझते हैं ऐसे अच्छे से. सो आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास ये क्वेश्चन है. ओके, पहले साथ में इस वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट इवेल्युएशन क्राइटेरिया को भी हम मॉनिटर करेंगे. उसके बाद हम समझेंगे कि हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, using the following okay, using the visual elements given in 10 boxes, create recognizable objects and give title to each. Use only black pencil pen. Draw only within the boundaries of the boxes. Now let's understand the scope which this question is providing us. All right. So first of all, they are using this term recognizable. Just a minute.
ओके, सो दे आर यूजिंग दिस टर्म रिकॉग्नाइजेबल। सो जो भी आप ड्रॉ यहाँ पे करोगे, मेक श्योर कि वो क्लियर होना चाहिए, वो अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आएगा, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गोइंग टू फेल। सो मेक श्योर दैट इट शुड बी रिकॉग्नाइजेबल। बट यहाँ पे one thing what we can do over here is that we are not restricted to use any angle। मीन्स अगर आपको किसी चीज का क्लोजअप शॉट भी आप रिकॉल कर पा रहे हो और आपको लगता है आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, so that is also a catch, you can draw the close up shot as well। all right, so we will be discussing that कि हम उन्हें कैसे accommodate कर सकते हैं। then evaluation criteria says originality and diversity of ideas। that means the more diverse it is, the more better it is going to be। and second is clarity, neatness of sketches। all right, of course it needs to be neat and decent। okay, so एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक सैंपल रख के मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम उन टिप्स के बेसिस पे से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो दैट देयर आर दीज थ्री स्टेप्स। ओके, mainly these top three steps I'm talking about. Fourth one is bit different. We will be discussing the fourth one as well. Okay, because I have kept it apart from these three steps. First, we will be watching that how these three steps could work। So the first one says stick to your most confident theme। अब यहाँ पे theme word mention है। Okay, so that means आपको कोई एक थीम पिकअप करना है। इस टेक्निक ने पर्टिकुलरली मुझे मेरे एग्जाम में बहुत हेल्प किया था। ओके, ये थीम कुछ भी हो सकता है। ये थीम कोई भी ऐसा आप सब्जेक्ट ले सकते हो जिसके अंदर बहुत सारी विजुअल्स हो, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हो, लाइंस हो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूं, मैंने ओशन थीम लिया था। ऑल राइट, सो व्हेन आई हैव यूज्ड ओशन एज अ थीम, so that means I have different shapes of fishes, I have sea corals, I have different things which I can found inside the ocean, for example pearls, for example seashells, etc। okay, so that means मैं अगर इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कर रहा हूं, तो rather देन कि मैं आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, मैं अगर अपने आप को एक फिल्टर लगा के सिर्फ एक सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज तक अगर मैं स्टिक हो जाऊं, फॉर एग्जांपल अब मैंने अपने ऊपर ये कंस्ट्रेंट डाल दिया दैट मेरे पास अब सिर्फ ओशन एक थीम है और मुझे जो कुछ भी बनाना है वो मुझे ओशन से रिलेट करते हुए बनाना है। ओके, सो इन दैट केस ओशन से रिलेट करते हुए whenever I'm making something, okay, it is going to be comparatively easier because related shapes कहीं ना कहीं accommodate हो जाते हैं। For instance, let's say that I have this line, this almost the straight line and all। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, ओशन से रिलेटेड मैं कुछ बनाने का ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है ओके वेट, यहां से हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ फिश जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव व्यू में शायद बना सकता हूँ। ऑलराइट, देन मुझे लगता है ओके, थोड़ी सी और डिटेल्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट व्हेन द मोमेंट आई एम एडिंग अ लॉट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट कि जैसे जैसे मैं इसे एक ही थीम के साथ जैसे मैं इसे स्टिक करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, आई विल बी ऑल्सो शोइंग some of the responses of what our team has solved, and then after that you will be able to see and understand better। right now I'm just annotating in order to explain the process। so for example, let's say मैंने ऐसा कुछ फिश जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ओके, अब मुझे लगता है ओके, मे बी हमने यहाँ पे फिश अकोमोडेट कर दी, एंड देन मुझे ऐसा भी लगता है कि वेट, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं एक और एक जूम व्यू, बिकॉज अगर लेट्स से कि कोई फिश मान लो पास है, ओके, और भी ज्यादा क्लोजर है, तो मैं उसका एक जूम व्यू भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देन मुझे फिर ये लगेगा ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसे और कैसे अकोमोडेट कर सकता हूँ। देन आई रियलाइज ओ वेट, यहाँ से तो मुझे एक फिश का हुक जैसा भी कुछ मिल सकता है जिसके ऊपर मैं कोई बेट इंस्टॉल कर सकता हूँ। ओके, एंड देन पोस्ट दैट मे बी दिस कैन बी जस्ट डिफ्यूज्ड, ऑल राइट, फ्रॉम द टॉप। देन ऐसा करते हुए मेरे पास कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज आ गए। ओके, so these kind of responses I can also generate in different categories। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओशन में ही हो सकता है। ऑल राइट,
सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कैटेगरी ले लेते हैं, लेट्स से कि मैंने ओशन कैटेगरी को डिस्कार्ड कर दिया, ऑल्दो इन ओशन कैटेगरी ऑल्सो देयर आर अगेन सो मेनी पॉसिबिलिटीज विच कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस। लेट्स से हमने ओशन कैटेगरी को अलग रखा, मैंने सिंपल फूड कैटेगरी ले ली। ऑल्दो आई रिकमेंड यू दैट ट्राई नॉट टू यूज फूड कैटेगरी, ओके, बट स्टिल food is something that can almost accommodate any shape, you name it any, okay, or you may just explore any random shape as possible, and then you'll realize that you can accommodate in food. Okay, so I realized that maybe I have something which is circular, and then I'm having a line like structure, and then I'm having something curvy. Okay, मुझे ये लाइन दिखी, अब मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा फूड मटेरियल है, ये कोई कटी हुई वेजिटेबल या कोई सैलेड का पीस हो सकता है, और मे बी वेट, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मुझे देखने से लग रहा है शायद मैं इसे ना एक सॉसेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो आपने यूरोपियन ब्रेकफास्ट में देखा होगा, ऐसे कई सॉसेजेस होते हैं। देन मुझे लगता है वेट, यहाँ पे इससे शायद मैं एक हाफ फ्राई भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। दोज हु आर एगिटेरियंस दे मे अंडरस्टैंड, ओके। सो अब लग रहा है कि ओके ये कुछ हाफ फ्राई जैसा लग रहा है, फिर मुझे ये लग रहा है कि ओके मैं इसे कहाँ पे एकोमोडेट कर सकता हूँ। इट कैन बिकम अ स्वीट डिश, बट लेट्स से अगर हम थोड़ा सा यूरोपियन कुजीन की तरफ ही बेंड कर रहे हैं, तो वेट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे ऐसे करके कंप्लीट करूं, देन ये शायद एक मफिन जैसा कुछ बन सकता है। ऑलराइट, आप सभी लोगों ने मफिन्स को देखा होगा, ओके। सो ये शायद मफिन जैसा कुछ बन सकता है, देन फिर मैं इसकी थोड़ी सी प्लेट्स की भी डिटेल्स को दे दूंगा। ऑलराइट, सो पॉइंट इज, अगर आप कोई एक थीम पिकअप कर लेते हो, आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, ओके। All right, I will be showing you an example in which I have fully drawn all the possibilities, and then you'll realize कि हम इससे और कितने कितने creative possibilities तक आ सकते हैं। I'll take some questions in the chat as well. So somebody is asking that, um, what makes the examiner impress if you have some consistent tips, all right? Not in ideas or creativity or good drawing, but something that he can short list us, something that makes him see us interesting. Well, one thing which I can definitely assure you is that uh, if you have to win over the examiner, you have already told that it should not be related to ideas. But I'm telling you, as long as you can ensure these two things, ideas as well as its clear description, because a lot of people have a lot of interesting ideas, but they are not getting communicated. Why? Because you are not physically present to explain your answer, but your sheet has to explain the answer. So yes, somebody is saying that they are watching a hammer. I get it. That's a very good possibility. All right. For example, I'm pretty sure that you must have discovered this particular part as the hammer one. Okay. Maybe a Thor fan. Okay, good. So yeah, coming back to the point which I was making over here, that uh, whenever an examiner is looking at your sheet, द फर्स्ट चैलेंज इज दैट वेदर योर आइडिया इज गेटिंग कम्युनिकेटेड और नॉट। तो आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, एक क्लीन डिसेंट प्रेजेंटेशन जो समझ आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये लगेगा बहुत जेनेरिक टिप है, बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन इनफैक्ट डू इट्स रियल टाइम टेस्टिंग। सॉल्व अ क्वेश्चन, गिव इट टू अ नॉन डिजाइनर, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फ्रेंड्स, एंड देन आस्क देम दैट व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। देखो कि क्या सबकी इंटरप्रिटेशन सेम आ रही है। In that case you'll realize that on the other side of the line what we assume that अगले को समझ में आएगा वो ऐसा होता नहीं है, okay? So one of the tips which I can give you is that make it as simple in terms of presentation, as simple as possible, okay? So yeah, that is the first tip, and you have to sit and resolve the ideas thing, okay? So a lot of interesting answers I'm receiving. Maybe we can do tools. Yes, you can do tools. If you think that the tool category helps you, you can in fact make it your forte, and then you can come up with this tool theme, and then you can create as many possibilities as possible for the tool one. Then somebody is saying a dog. Well, you have to draw and try. Then hair dryer. Yes, loosely, and hair dryer. Yes, in a perspective view, I can also sense it quite good.
So yes, toys can also be a category, no denial in that. It's just that you need to understand what you have to avoid. किसी भी type का decor avoid करो guys. Okay, because easily your competition can also come up with decors. Okay, anything which looks abstract, decorative, this is quite monotonous. Also, avoid any kind of art or pattern. All right. For instance, you can also simply create any kind of sari pattern like this, but then that can accommodate almost all the shapes. So how are you creative? Okay. So try to avoid these kind of ideas. So you need to understand that what actually looks interesting and what doesn't look interesting. Okay. So stick to maybe compositions, objects, or if you are able to master a theme, you're good to go. Okay, because theme can give you an access of pool of objects which you can easily accommodate. Okay. In fact, if you are going to master theme, then if in case you witness a creativity question like this, where you have to create a story by connecting all of these boxes, it will be easier for you because you have picked up one theme, and then creating a story along with that will also be easier. So this was the first step. All right. Then also let me know in the live chat whether this worked out for you, whether you understood this or not. Okay. क्या आपको ये थीम टेक्निक समझ में आई, एंड इफ अगर समझ में आई, सो व्हाट इज योर फेवरेट थीम which you would like to proceed? You can also answer that in the live chat. I would also love to see that what kind of theme suits you guys. Okay. Then second tip, what we are trying to learn from this is that try your luck with random lines. Sometimes you never know, but अगर आप जैसे random lines को आप यूज करके अगर आप चेक करोगे कि हाँ हम इससे क्या मिलता जुलता कुछ भी बना सकते हैं, तो कई बार ना ऐसे रैंडमली लाइंस को जोड़ने से भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है समझ में. ओके, फॉर एग्जाम्पल मे बी अगर ये कर्व घूम रहा है तो मैं इसे ऐसे रिवॉल्व कर दूं, और मे बी फिर मैं इसे लेट्स से यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं, देन में भी देखने से लग रहा है वेट ये तो शायद एक पिज्जा का शेप भी बन सकता है और ये कोई टॉपिंग भी बन सकती है. ऑलराइट, तो कई बार ऐसा होता है दैट आपको लगेगा कि एक्सीडेंटली आपके पास सॉल्यूशन आ गए, बट इसका मेन कैच ये होता है दैट इफ यू आर if you are just randomly making some lines, you can land on some random idea, which is a good thing. All right. So yeah. Then moving on to the third one, sometimes visualizing motions states can also help. We will be understanding this by an example. And fourth one is composition. So let's understand the composition one. Okay, this example is a really good solution in my opinion. You can also tell it to me in the chat that what is your opinion on this one? I personally think that this particular solution is a really good, a 10 on 10 thing. Okay, you can see diversity. There are food materials. There are in fact these facial details. Okay, this one got my attention. Amazing. Okay. So point over here is that here you can witness a lot of diversity. Now this diversity is not coming out from a common theme, but it is coming out through compositional details. So yes, this can act as a savior in your case. All right. If you are इंटीग्रेटिंग कॉम्पोजिशंस, अगर लगता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे किसी स्टेट में पहुंच गए हो जहां पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब इससे आगे क्या रिस्पॉन्स हमें डालना चाहिए, कोई भी आपके दिमाग में आइडियाज ही नहीं आ रहे, मे बी किसी कॉम्पोजिशन के अंदर आप उसे इंटीग्रेट कर दो, एंड दैट कैन सेव यू. ऑल राइट. सो मेक श्योर दैट यू try some of these examples where you can also accommodate compositions, but make sure that it should not be monotonous. वो बहुत repetitive नहीं होना चाहिए. वो जितना डाइवर्स होगा वो उतना अच्छा होगा. ओके, गेटिंग मी? या. ऑल राइट. सो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू. यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि कई बार पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ जूम व्यू, मैक्रो व्यू, माइक्रो व्यू, इन सबको कैप्चर किया हुआ है. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, द फेवरेट वन विच आई वॉज मेंशनिंग. ओके, दिस इज हैविंग अ क्लोजअप शॉट. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. क्लोजअप शॉट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बस वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए. वो ऐसा भी कोई क्लोजअप शॉट नहीं होना चाहिए जो समझ ही नहीं आ रहा. गेटिंग मी? सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल ऑन द फर्स्ट प्लेस. सो लेट मी नो इन द चैट
if you are able to understand and resonate with all these things. Okay, these things, these particular techniques have helped me, and I have scored quite good in Torrance test because of these. Okay, yeah. Now I can see a lot of people are projecting a lot of creative ideas. Like somebody has said a meteor shower over a city. Yes, you can do that. All right. But a meteor cannot be in the reverse direction and all. But yes, in some of the possibilities, you can do that. And it won't be vertical then. All right. So you have to stick to the diagonal one. Okay. So at the same time, yeah. Okay. Let me check other responses too. Okay, so somebody has actually validated that this theme technique is working out for them. So good to know that you have done that. So somebody has talked about their favorite themes, which is toys, oceans, animals. That's good. In fact, all these three themes can accommodate a lot of details. Somebody is asking, ये questions bachelors में आता है? बिल्कुल. बैचलर्स में तो बहुत टाइम से आ रहा है. ओके, सो इसका मतलब है कि आपने अभी तक शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं. सो आई विल ऑल्सो हाईली रिकमेंड यू कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो. यूसीड में उतना नहीं है, बट इन एनआईडी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट. ओके, या, ऑलराइट. So thank you for the compliment. Somebody has also complimented that they have found this solution quite creative. All right. Now, as I have told you that we will be discussing this third tip. Sometimes visualizing motion state helps. Okay. हम इसे भी समझेंगे कैसे. I will be now showing you this question. Okay. साथ में इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि वो थर्ड टिप यहाँ पे कैसे वर्क करने वाली है. Okay. So each of the boxes in the answer script shows some visual elements, and the first word for a title of the image. Draw recognizable images, all right, by interpreting the visual elements and give a title to the images using the given first word. We have a constraint over here that whatever title we are going to create, that particular title should be having uh, this first word that they have already provided us. Uh, we have to try our best to accommodate these. Okay, we will be discussing and dissecting this better. Then continuing the question, it says use only black pencil and pen. Draw only within the boundaries of the boxes. ठीक है. Okay. All right. So अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब आप ये देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं, लिसन, प्ले, ड्रॉप, होल्ड. ओके, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं, ओके, इन वर्ड्स में कई लोग, जब भी मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, उन्हें मेन कंफ्यूजन ये होती है, वो इन वर्ड्स के मीनिंग्स को कैच करते हैं. ऑलराइट, मीनिंग्स और रिलेटेबल टर्म्स को, एंड देन दे राइट इट. रादर देन दैट, आई वुड से, मैं ये नहीं बोल रहा ये अप्रोच गलत है. The point which I'm trying to make over here is that the most safe-sided response you can come up in this case is that uh, whenever you are using these words, use them directly. Okay. सो अगर आप ऐसा कर पाओ तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्हें डायरेक्टली नहीं यूज करोगे तो फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है. बट सिंस दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो योर स्ट्रोक शुड बी द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रोक आउट देयर. ओके, सो अगर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लाना है जिसमें मार्क्स आपको मिले ही मिले, आपको कोई रिस्क नहीं लेना, सो टू जस्ट टू बी सेफ साइडेड, ट्राई अकोमोडेटिंग दीज वर्ड्स डायरेक्टली. ओके, अब ये वाले जो रिस्पॉन्सेज है ना, आप इनमें सॉरी, ये वाले जो आपको शेप्स इस क्वेश्चन में मिले हैं, अब इन्हें किसी भी थीम में अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे. इवन इफ यू आर टेकिंग टॉय थीम और इफ यू आर टेकिंग एनी अदर थीम फॉर दैट मैटर, दे कैन बी अकोमोडेटेड. ऑल राइट, बट ऐसे में होता क्या है, कई बार टाइम लग जाता है. ये सारे केसेस में नहीं होगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल दीज रिमेनिंग टिप्स कैन वर्क आउट. बट अगर फॉर इंस्टेंस ऐसी कोई कंडीशन आ गई जब आप इन्हें नहीं अकोमोडेट कर पा रहे, इस केस में एक मतलब एक आपको यहाँ पे एक मोशन कार्ड भी चेक करना चाहिए. ओके, जैसे
जो थर्ड टिप है दैट सेज, एक बार जरा इस शेप को आप देख रहे हो, इसे सोचो कि अगर ये हिलने लगे, ऑलराइट, अगर ये ऐसे मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये शेक कर रही है, तो क्या इससे रिजेंबल करता हुआ कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर ये अचानक मूव करना, शेक करना, वाइब्रेट करना शुरू कर दे तो, ऑलराइट, सिमिलरली ये अगर ऐसे शेक या वाइब्रेट करने लगे तो मिलता जुलता कुछ आ रहा है समझ में? या अगर ये थोड़ा सा शेक या वाइब्रेट करे, सिमिलरली ये थोड़ा सा शेक या वाइब्रेट करें, ओके। कई बार ऐसा होता है कि चीजों को मोशन में सोचने से आपको और आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको जब विजुअलाइज कर रहा हूं कि ये शेक करेगा, सो ये मुझे किसी बर्ड के किसी ऑर्गन से रिजेंबल करता हुआ कुछ समझ आ रहा है, ओके। सिमिलरली जब मैं इसे शेक करते हुए समझ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है, वेट, वो किसी ने अगर निंजा हथौड़ी या ऐसे कोई शोज देखे होंगे, ओके, तो आप लोगों को याद होगा दैट ऐसे निंजाज ऐसे कुछ स्टार ब्लेड्स वगैरह फेंकते थे ना। सो वो अगर लेट्स से कि कोई प्रैक्टिस के लिए उन्हें यूज कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो वो अब जब ये शेक कर रहा है तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ कुछ आइडियाज क्लिक कर रहे हैं, ओके। देन थर्ड वन, ये ऐसा हो सकता है कि ये कोई माउंटेन की कोई मतलब माउंटेन्स को कनेक्ट करने के लिए देर इज लाइक अ स्मॉल राइड, ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दीज वायर्स, ओके। ये ऐसा कुछ हो सकता है। देन इन द फोर्थ वन, ऑलराइट, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये कोई ऐसे एरो जो किसी को लग गया हो, ऑलराइट, इट कैन बी एज रैंडम एज दैट, ठीक है। मैंने इसे सॉल्व किया विद दैट सिमिलर अप्रोच विच आई एम डिस्कसिंग विद यू, एंड मुझे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेज मिले, ऑलराइट। अब आप ये देखो, यहां पे जैसे हमने पहले कुछ ड्रॉ किया, हमने नीचे लिखा लिसन टू द नेचर, मतलब उन वर्ड्स को ही एकोमोडेट कर दिया टाइटल में, ओके। सो दिस इज लाइक द मोस्ट सेफ साइडेड अप्रोच विच यू कैन प्ले इफ दे आर स्टार्टिंग एनीथिंग विद वर्ड्स। मेक श्योर दैट you master your articulation on such a level that you are able to accommodate that word as the starting word itself on the first place, okay. Then later on, I have talked about that example and I have also drawn it and then shown it. Okay. Fourth one may I have shown Mickey Mouse. All right. Third one may I have shown what I have just discussed. Okay. You can let me know your comments in the chat. Okay. So I would not be able to come up with these kind of responses if I wouldn't have visualized them in motion. So sometimes motion can get you ideas. So do let me know in the chat if you have understood this or did you find it helpful? Do let me know. Okay. All right. Somebody is saying whistle, somebody is saying earring on the ear. Yeah, I agree with you. You can draw and try it yourself. Okay. सो हमने टॉरेंस टेस्ट में इनकम्प्लीट लाइंस को कंप्लीट करने के बारे में डिस्कस किया, बट क्रिएटिविटी टॉपिक not only accommodates Torrance test, but it also accommodates some other type of questions too, which we will be covering today. Okay, allow me a moment. Yeah. Now, take a look at this question. All right. Now it talks about alternative uses of a product. Here we have been provided sneakers in this case. Okay. Whenever we are talking about alternate uses, I will also be giving you another jargon which can help you understand this better. Okay, that is unconventional uses. All right, conventional use नहीं होना चाहिए. For example, shoes are used as footwear in order to cover feet while we are walking. Okay, in this case, it should be different than that. वो यूज केस आपको इंक्लूड नहीं करना, उसको ऑल्टरनेटिवली यूज करना है, ओके। नाउ इवन इफ यू आर यूजिंग दिस footwear thing and then you are creating a footwear for let's say someone else, maybe your pet dog or maybe your cat or maybe any other animal for that matter, still it will be counted as a conventional use case, okay. So in that case, I would highly recommend you that whenever you are dealing with these questions, make sure that you look at the material into two parameters. First is the parameter of what material it is created with and what scopes we can get within this material. All right. सो हमें मटेरियल का स्कोप समझना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे हमारे पास स्निकर्स मटेरियल है, मे बी इफ वी वुड हैव हैड समथिंग मेटालिक, देन हम इसे कैसे विजुअलाइज करते?
हम ये देखते हैं कि मेटल कौन कौन से स्कोप्स को एकोमोडेट कर सकता है। मेटल इज अ रियली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इज ऑल्सो सोनोरस। मेटल इज ऑल्सो डक्टाइल। ओके, सो दैट मीन्स अगर वो सोनोरस है सो हम उससे कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। अगर वो कंडक्टर है सो दैट मीन्स हम उसे किसी टाइप के सोलर पैनल, सोलर हीटर, ऐसे किसी जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो पॉइंट इज दैट मटेरियल कुछ भी हो सकता है। मटेरियल क्या क्या स्कोप अलाउ कर रहा है, वो जब आप सोचना शुरू करोगे तब आप इन सारे क्वेश्चंस को और बेटर सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ हमारे पास मटेरियल तो है, रबर। ओके, एंड एट द सेम टाइम we have mostly rubber, and then we have some cloth material too within this. Okay, in both the cases you have to think that what these two materials can allow me to do, what are the properties which they can accommodate. सो फर्स्ट इज आपको इस फॉर्म में सोचना है। सेकंड, आपको फॉर्म फैक्टर के बारे में सोचना है। फॉर्म फैक्टर से मेरा मतलब है शेप। ओके, अब आप ये वाली शेप देख पा रहे हो ना, क्या इस शेप को और कहीं भी यूज किया जा रहा है? कई बार एज इट इज सेम की सेम शेप को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो आपको इन दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से भी सोचना है। ओके, अब जैसे मैंने मटेरियल्स के बारे में सोचा तो मुझे पता चला ठीक है, इस मटेरियल में थोड़ी सी इलास्टिसिटी है। सो मैं इसके से रिलेटेड कुछ इलास्टिसिटी बेस्ड यूज केसेस ला सकता हूँ। ओके, पूरी तरह से रिजिड भी नहीं है, ऑलराइट, बट पूरी तरीके से 100% फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इट लाइज समवेयर बिटवीन दैट। ओके, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कैन थिंक ऑफ दैट ये जो शेप है ये मैंने और कहाँ कहाँ पे देखा है। क्या ये टेलीस्कोप से मैच करता हुआ है? इनफैक्ट इफ यू विल स्लोली सी द फॉर्म फैक्टर यू विल रियलाइज कि ये वाला शेप आपको और कहाँ कहाँ पे दिखा है। You can in fact answer that in the chat as well. Okay. अब ये ना, I don't know how many of you can resonate, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे जो जो लोग लेट्स से गन्स कैरी करते हैं ना, तो जो पिस्टल होती है उसका जो कवर है ये उससे भी काफी रिजेंबल करता है। ओके, सो these kind of ideas also we can accommodate. So form factor in materials, and let me show you how exactly I have solved this question so that it can give you a better idea. ऑलराइट, ये मेरे सामने कुछ कुछ आइडियाज है, अब आप इन्हें देखो और अब आप ये बताओ कि इससे आपको क्या आया समझ में। सो प्लांट्स एंड डेकोर का आई गेट इट, सभी को ये वाले आइडियाज आते हैं। ऑलराइट, देन एट द सेम टाइम हाउ अबाउट इफ वी आर नॉट ओनली यूजिंग देम एज फुटवेयर बट ऑल्सो फॉर क्लीनिंग। ऑलराइट, रादर देन मैं पोछा उठा के साफ करूं, हाउ अबाउट मैं इसी को ही इसके अंडर इन द फॉर्म ऑफ स्केट्स में से इंटीग्रेट कर दूं। देन एट द सेम टाइम फॉर क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सिस्टम्स, ये आपने ऐसे देखा होगा कई बार माउंटेन ट्रेनर्स को इस तरह से ऐसे चढ़ने के लिए वो प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे होल्डर्स लगाते हैं। रादर देन दैट हम तो यहाँ पे प्रॉपर शू को भी तो स्टिक कर सकते हैं। ऑलराइट, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज होल्डर्स। अब ये वाला यूज केस यहाँ पे कैसे है? ये वाला यूज केस आया यहाँ पे when I thought about the cavity within which we insert feet in the shoes. Okay, so that is the potential of form factor. And can you see the vacuum cleaning adjustment? Because you must have seen that a lot of advanced vacuum cleaners, they are having different caps for different types of for different types of spaces where they have to clean it. In that case, in fact, it can also be used as a particular cap by making certain adjustments. So what do you think about this? Do let me know in the chat. Okay, or in the meantime I will also take some questions if there are any questions for me. But he is saying, how can I make my presentation clean and communicable? In that case, I would highly recommend you to first refer to some of the industrial design sketch presentations. Pinterest is the best source. All right, just write over there industrial design sketches. In fact, there are a lot of interesting Instagram pages where you can refer. Whenever an industrial designer is showcasing their products, they are using a hero image. When I'm stating about hero image, we are talking about one big elongated image, and at the same time they show their top view, side view, etc. ये टेम्पलेट्स आपको रेफर करने चाहिए, और ऐसे तीन चार टेम्पलेट्स जो आपके कुछ फेवरेट्स हो उन्हें आप एक जगह पे डाउनलोड करके आप इसे साइड में ऑर्गेनाइज कर लो। इट्स बेटर दैट यू ऑल्सो प्रिंट them out and then stick it on wall, or maybe if you are having a pin board with you. All right,
देन अपने जितने भी आंसर्स है उसे उसी टेम्पलेट के अंदर अकोमोडेट करके देखो वेदर इट इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट. ओके. Then do not make it text heavy. This is also a very important tip for you. If it is text heavy, nobody is going to read that. All right. So make it visual heavy rather than text heavy. And at the same time, simply just do not use, I mean, a lot of smudging in your sheet. Okay. So in general, try to keep it tidy as possible. Okay, somebody is saying maybe a hanging plant holder. Yes, it can be created in that way. All right. Although I would say that any kind of decor is something which you should be avoiding. But yeah, this can be a good use case. Then second one, Sharpie tool to store करने के लिए मतलब एग्जैक्टली क्या स्टोर करना है वो डिफाइन करना पड़ेगा और वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. Somebody is saying bird feeder. Yes, it can be created like a bird feeder. Almost any object, any tangible object you will get out there, it can easily be used as an animal feeder. All right, be it birds or anything. So maybe you should be pushing yourself to come up with different kind of ideas. But yeah, it can be a good one. All right. So now let me take one more question on the same lines, and then let's understand this one better. Okay, we will be using again the same approach of understanding the material as well as understanding the form factor. So let's read the question together. You have an old umbrella. Conceptualize 5 ways in which umbrella can be reused humorously. Uh, Draw the ideas and briefly explain it. Now, the word that is important for us is humorously. Most of the people misunderstand this word because they think that there needs to be some kind of comedy that needs to take place. No, that's not the case. All right. When we are talking about humor, humor is highly subjective. What could be humorous for me may not be humorous for anyone out there. So, in that case, we have to understand that when we are talking about humorously, that means we are again trying to do something unconventional. Whenever we are going to do something unconventional, it is more often than not is going to be humorous for someone. So, you have to interpret that question in the similar lines only rather than getting confused. Okay. So, yeah, before I approach to the solution, I'll take one more question. I can come out with good ideas, but when there is a time bound, I get stuck and lag in time management. How to overcome this? First of all, you need to understand that time management is a byproduct. ओके. टाइम मैनेजमेंट ऐसे समझने से इंप्रूव नहीं होता, वो ओवर द टाइम ग्रेजुअली खुद ही इंप्रूव होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ बाई प्रोडक्ट. इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? It is byproduct of good design process which you are able to efficiently do it in 5 to 7 minutes. Good ideation. All right, if you're using a process or if you're not using a process is totally up to you, but uh, efficient use of ideation, efficient use of proper execution like fast drawing skills as well as fast presentation skills. If you have already set some kind of templates in your head, then that's good. If you're going to do everything right and if you're continuously practicing it, then you won't even realize, but subconsciously you are going to simultaneously work upon your speed as well. ऑल राइट, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 20 या 21 डे तक आपकी स्पीड जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उससे काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी. सो पहली बात, स्पीड, आप अगर डेलिबरेटली बैठोगे स्पीड इंप्रूव करने के लिए तो वो नहीं होता. रादर देन दैट, अगर आप अपना आइडिएशन और स्ट्रॉन्ग करोगे, अपना एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग करोगे, सो स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि अच्छे आइडियाज तो आ रहे हैं, एट द सेम टाइम वो पूरा प्रोसेस भी फास्ट हो रहा है. The more your brain is going to be habitual of all these things, the more faster you're going to become. So first, keep it in your head that this is a byproduct. Second thing is that if you have to genuinely make yourself faster, then make sure that you integrate a lot of timers in your phone. Okay, if let's say that you have to solve a particular question in 15 minutes, so on every 3 minute, all right, the bell should ring so that you can understand that 3 minutes are over. So 1 out of 5, I mean 1/5 of the time is over. This is how you have to train your brain for this. Okay. All right. So I will. Okay. Somebody has also asked this question. Unconventional है इस या इसकी तो प्रॉपर्टी ही. ओके, व्हाट इज इट रिटन? प्रॉपर्टी ही बदल जा रही है, तो इसकी एग्जाम में कर सकते हैं.
मैं समझा नहीं, प्रॉपर्टी बदल जा रही है इन द सेंस, मतलब क्या आप उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो? आपको उसे आप उसे डिसमेंटल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप ऐसे ही कोई यूज केस लो जिसमें आप ऐसा डिसमेंटल उसे करो सो दैट इट कैन बी रीअसेंबल्ड। आई डोंट नो वेदर आई एम आंसरिंग ऑन द राइट पार्ट और नॉट। इट्स बेटर दैट यू प्रॉपरली एलैबोरेट व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक है, अब इस वाले सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पता चलेगा। So there you go. I have now shown you certain examples. Okay. फर्स्ट इज हैंगिंग मैकेनिज्म, यस ये एक हैंगर की तरह यूज किया जा सकता है। सेकंड, हम इससे काइट भी बना सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मीम दैट वेंट वायरल एंड विच एक्चुअली अ मंकी accidentally got flew he got flew away, all right, because he holded an umbrella, all right. Then in fact it can also become a very interesting swimming pool. Okay, this kind of interesting adaptation has been shown in our cartoon channels way back, if anyone has seen those shows, all right. So ये ये आप लोगों ने अपने टाइम पे देखा भी होगा, इनफैक्ट दे वर यूजिंग दैट एज मोड्स। सो आई वोंट डिनाई आई हैव गॉट दिस आइडिया फ्रॉम देयर, ऑलराइट। देन we can also create a solar panel if we are going to install some kind of reflective material, all right, then or maybe a solar cell over here, so we can make it like quite of a good solar panel also. In fact, a solar heater can also be created on those same lines. And umbrellas can also be used for advertising. Like, think about it. If there is a lot of rainfall which is taking place and a lot of umbrellas are getting used, it's a space which can be used for advertising. All right. And then maybe free umbrellas regarding that brand, okay, showcasing that brand and brand value, it can be distributed. Or at the same time, the sellers can also get another source of income from these companies who wants to promote their brand. Okay. So in fact, this is also a use case. It is not a direct tangible use case, but the question has not restricted us that we cannot use it in these lines. Okay. So that's the reason that I have shown this one. All right. So we have up till now we have solved four questions and then two of different category. We have understood about unconventional uses, and at the same time we have also understood about how we can complete the incomplete lines and come up with diverse possibilities. All right. Now I will give you guys the opportunity to ask questions. Now this is like a Q&A time for me. And if you guys have any questions regarding this exam, and if you want my advice on it, then feel free to put it in the chat, and then I will be picking them up and then I will be answering those. All right. I think I have already answered most of the questions which you guys have sent up till now. Okay. Hmm. All right. So I have answered almost all the questions. So I hope this particular session has helped you. I want you guys to continue practicing about Torrance test as well as unconventional users based questions. The approaches which we have discussed in today's session, I'll tell you that uh, these particular approaches, it takes time for you to integrate in your workflow. Okay. सो इनमें टाइम लगेगा आपको, पहले एटलीस्ट इनके साथ एक वीक तो स्पेंड करना चाहिए इन टेक्निक्स के साथ। बिकॉज अगर आप इन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी दोगे, इन्हें कोई भी चीज जो भी आप लर्न करोगे ना यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर न्यू लर्निंग इज इज गोइंग टू बी न्यू फॉर योर ब्रेन टू accommodate in their workflow. So you have to give fair opportunity to all these techniques so that you can create a habit of it. All right, then only you will be able to unleash the best of it. Okay. सो आई वुड से थीम बेस्ड टेक्निक की पहले आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट एक वीक में, बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है, अपनी फेवरेट थीम को फाइंड आउट करो। ऑलराइट, देन एक्सपेरिमेंट विद इट, एटलीस्ट create 10 different shapes from one single line arrangement, and then try to make it as diverse as possible. One of the good approaches which I can tell you is that you shortlist 3 4 themes, and then after that
solve that same question 3 4 times in different themes, and then check that which theme you are able to come up with most diverse solutions in the least time possible. And maybe that is the theme which you should be shortlisting. So it's better that you derive the choice rather than you think that this choice is going to be interesting for the examiner. So it's better कि आप पहले खुद का प्रोग्रेस मॉनिटर करो वहां पे. Okay. Umbrella used as a photographic studio, but that's a conventional use case, more or less, in studios. We are anyways using that, okay, to control light. So I would say still try to come up with a new one. I know that the use case which you have mentioned is very practical, very realistic, okay, but just to push you, you can come up with better ones too. क्रिएटिविटी के लिए बुक्स हेल्पफुल हैं न सर, सजेस्ट सम क्रिएटिव एक्टिविटीज टू डू व्हेन बोर्ड. Well, I would say exam is quite near. So first of all, you getting the time to get bored is also a luxury. But yeah, what I can tell you is that ideally, if you are burnt out of preparation and you feel like that you need an activity, then simply just start revisiting all these shows such as FAQ, MAD, Backyard Science. You must have seen that shows. Okay, you will find them on YouTube, and then they are already inventing something or the other in these videos. In fact, you should be watching all the DIY stuff. Your entire Instagram and YouTube algorithm should be reprogrammed that you are only and only watching creative use cases of objects. So that should be the uh, correct approach of you accommodating a lot of ideas whenever you're using your device. In that case, the screen time won't harm you, but help you. Okay. There are many questions in exam and topics. So how to practice that this many topics? Okay. Maybe you want to ask that how you can practice all the topics. The best approach which I can tell you as of now is uh, to solve as many test series, as many test papers as possible. Solving a new test paper simply means that you are giving the exam before giving the actual exam. All right. The more test series you are going to solve, the more you are going to be prepared. If you are going to solve one paper a day for 1 month before this exam, in that case, you will be able to give this exam at least 30 times before giving the actual exam. And then the feeling which you should be carrying in the exam hall should be like this, that this is just a 31st paper which you have to solve, rather than you carrying such an emotional baggage on the examination hall that you have to give your best. Okay, this is my advice. All right. So I hope that this particular session has helped you. All right. And these techniques have helped me for cracking my exam. And I wish all of you all the best for your exam. Okay, prepare hard, give it your best shot, and just be the best creative person out there. Thank you.